Uh, what is art? So, art encompasses a wide range of human activities and creations. Uh, for instance, in the visual sense, we have paintings, we have drawings, sculpture. In the auditory sense, we have music and sound installations. Uh, and in the performative sense, we have theater, dance, performance art. All of these things, they come under the broader category of, or the ambit of, um art. So we have visual art, we have auditory art, we have performative art. Art is expressive, communicative, and uh, it can serve as a reflection of society. So आर्ट जो है वो सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है sometimes it communicates as well and by that we mean it can communicate certain emotions, it can communicate certain messages, certain social messages, political messages, uh, and of course art is an expression of inner thought process. It can be an expression of uh, deep rooted emotions as well. Uh, so art can be functional, for instance, design and architecture. So uh, आप जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, they have a certain kind of design, right? For instance, the cell phones that you use, they have a particular kind of design. From your clothes to your bags to shoes, all of these things, they have a particular kind of design. And sometimes, those designs could be more artistic, and sometimes, they are just ordinary. But so design and architecture, they are part of the artistic sensibility. So art could be functional in that way, and art could just be aesthetic. So aesthetic would be something, that doesn't necessarily have to have functional value. So aesthetic, अभी हम अगली स्लाइड में भी उसका डिस्कस करेंगे. It's just about uh, beauty and your sense to appreciate beauty. So it doesn't necessarily have to have any functional value. Okay. About aesthetics. So aesthetics is a branch of philosophy that deals with beauty, taste, and the creation or interpretation of art. So your aesthetic sense is actually a sense that helps you to perceive and appreciate beauty, to sense the beauty, to feel the beauty, to appreciate it. So it focuses on how we perceive and evaluate beauty and art. So aesthetic experiences can be emotional, intellectual, and even transcendental. So by transcendental, we mean, something that is beyond ordinary life. So uh, normally we have five senses. For instance, sense of sight, sense of smell, sense of taste, etc. Aesthetic sense uh, is a sense that involves all these senses, but more, right? So it is the sense that allows you to perceive beauty through all your other senses. So again, aesthetic judgments are subjective. What one person finds beautiful, another person may not. Uh, so let's talk about history of art. Uh, so in the history of art, we have certain time periods. Uh, we have early art forms जिसमें cave paintings हैं, rock carvings हैं, and they reflect human beings relationship um, with nature and divine. So example is the cave paintings in France. So these are the examples of the cave paintings. In these paintings, you could see
एनिमल्स, क्योंकि जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज थी वो हंटर गैदरर सोसाइटीज थी, जिसमें ह्यूमन बींग्स वुड हंट एंड हंट एनिमल्स। सो इंसानों का जानवरों के साथ जो है वो बड़ा लाइक डुअल किस्म का रिलेशनशिप था, जिसमें इंसान जो है वो जानवरों की तरफ प्रेडेटर्स भी थे और प्रेज भी थे, और बिल्कुल इसी तरह से जो जानवर हैं वो भी इंसानों के लिए प्रेडेटर्स भी थे और प्रे भी थे। यानी इंसान जो है वो जानवरों को हंट करके दे वुड अरेंज फूड फॉर देमसेल्व्स, और उनकी स्किन को इस्तेमाल करते थे, उनकी बोन्स को इस्तेमाल करते थे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और बिल्कुल इसी तरह उनके लिए खुद को जानवरों से बचाना भी जरूरी था, बिकॉज एनिमल्स कुड अटैक देम एंड जस्ट ईट देम अप। सो उस वक्त पे जो सर्वाइवल था उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरडिपेंडेंस थी, या सबसे ज्यादा जो उनको सोचना पड़ता था, दे वुड हैव टू थिंक अबाउट एनिमल्स। या तो वो ये सोच रहे होते थे कि अच्छा वी नीड टू गो आउट एंड हंट सम एनिमल एंड ईट इट, और दे वुड कॉन्स्टेंटली बी थिंकिंग दैट वी नीड टू सिक्योर आवरसेल्व्स अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। तो ये केव पेंटिंग्स है, ये आपको इसके अंदर यू सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स हेयर। ऊपर वाली केव पेंटिंग में भी यू सी हॉर्सेस, like symbolically you see a lot of animals, and that is also a reflection of how society or how life was at that time. So in this sense अगर हम देखें तो art is a reflection of art is also a reflection of a society at a particular time. So and this prehistoric art also tells us that human beings' ability and inclination to create art is as old as the humanity itself, right? So एक तरफ art जो है वो expression है लाइफ का, जिस तरह से किसी एक पर्टिकुलर वक्त पे जिंदगी गुजारी जा रही है, और दूसरी तरफ ये है कि आर्ट इज एज ओल्ड एज, और द एबिलिटी टू क्रिएट आर्ट, और द एबिलिटी टू, or the inclination to create art is as old as the humanity itself. Okay. The next time period that we are going to talk about is in ancient art, जिसमें Egyptian है, Greek है, और Roman है. So ancient art focuses on gods, immortality, idealized human forms. So the first the first painting that you see is from Greek art. The sculpture is also, from either Greek or Roman art. The third picture that you see is from Egyptian art, and the fourth one is again, if I'm not wrong, this is from Roman art. So either Greek or Roman. लास्ट पिक्चर में आपको एक ये वेस नजर आ रहा है. नाउ दिस काइंड ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन वाज very common at that time. There is this English poet and his name is John Keats. So John Keats की एक नज्म है जिसका नाम है Ode to a Grecian Urn. So ये जो आपको वेस सामने नजर आ रहा है, इसका दूसरा नाम जो है वो अर्न भी है, URN. So उस नज्म में जो नैरेटर है, ही स्टैंडिंग इन अ म्यूजियम एंड ही लुक्स एट द अर्न, ही लुक्स एट द वेस, एंड ऑन दैट वेस उसकी मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर चार या तीन मुख्तलिफ तरह की सीनरीज हैं, इमेजेस हैं जो पेंट हुए हुए हैं. और व्हेन द पोएट लुक्स एट दोज इमेजेस ऑन द वेस, वो उनको बारी बारी देखता है, और उसके उन इमेजेस को देख के उसके जहन में उन इमेजेस से रिलेटेड कहानियां बनना शुरू हो जाती हैं कि ओके ये जो इमेज इसके ऊपर है, ये कौन सी कहानी को रिप्रेजेंट करे, इसके पीछे कहानी क्या होगी, राइट? सो उस नज्म के जो स्टेंजाज हैं उसमें जो थ्री स्टेंजाज हैं, दे आर अबाउट those images and the possible stories behind those images. And the fourth one is about the general artistic sensibility. So ancient art focused on gods, क्योंकि वो पैंथीस्टिक सोसाइटीज थी, यानी उसमें एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखा जाता था.
फिर चूंकि एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखा जाता था, तो जो इमॉर्टैलिटी का आइडिया है, दैट वाज आल्सो वेरी कॉमन एट दैट टाइम. अच्छा. सो जो अ, इससे पहले हम बात कर रहे थे इस बेस की, ये जो आपको गुलदान नुमा चीज नजर आ रही है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस बने हुए हैं. इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनी हुई हैं. तो जॉन कीट्स की जो नज्म है ओड टू अ ग्रेशन अर्न, उसके अंदर शायर जो है वो एक म्यूजियम में खड़ा है और उसके सामने ये इस तरह का एक बेस है, और उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं. और वो जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो ये सोचता है कि इन पेंटिंग्स के पीछे कहानी क्या है, यानी इसमें जो इमेज तस्वीर नजर आ रही है उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है. और वो शायर जो है वो फिर उस कहानी को इमेजिन करता है, और फिर उसने वो नज्म लिखी जिसमें जो तीन उसके स्टैंजास थे, उसमें वो इमेजेस और उनके पीछे की कहानी उसने लिखने की कोशिश की, और चौथे में उसने ये बताया कि किस तरह से जो आर्ट है वो टाइमलेस है. सो तो ये वाला आर्ट जो है इसमें इंसानों और खुदाओं का ताल्लुक, क्योंकि अब जो सोसाइटीज हैं इस जमाने में वो पैंथीस्टिक सोसाइटीज हैं, यानी वो सोसाइटीज जो काफी सारे खुदाओं पे यकीन रखती हैं. सो उनके लिए पास बारिश के लिए अलग देवता है, फसलें उगाने के लिए अलग देवता है, समंदर का देवता अलग है, वगैरह वगैरह. सो चूंकि उनकी जिंदगियां जो है वो इस आइडिया के साथ बहुत ज्यादा हर वक्त इस आइडिया के साथ जुड़ी हुई थी, मल्टीपल गॉड्स के आइडिया के साथ, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको आर्ट के अंदर भी नजर आती है. अच्छा. देन फिर हमारे पास मेडिवल आर्ट आता है. इस जमाने में क्रिश्चियनिटी का होल्ड बहुत ज्यादा था. जो सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी थी, दैट वाज पर्टिकुलरली वेरी रिलीजियस. सो आर्ट इस जमाने में जो है वो इट वाज लार्जली रिलीजियस, और आर्ट के अंदर आपको ज्यादातर जो है वो स्पिरिचुअलिटी और या फिर डिवाइन सब्जेक्ट्स जो है वो नजर आते थे. अगर आप इन तीनों पिक्चर्स में देखें तो इन तीनों पिक्चर्स में आपको फर्स्ट वन में देयर इज दिस pastor in the church who is sitting at a heighted platform, और वो he's delivering some kind of sermon, जिस तरह हमारे यहाँ भी जुमे का खुतबा होता है जिसमें मौलवी साहब is sitting on a raised platform and you know uh, delivering the sermon. ये उस तरह उससे मिलता जुलता आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है. दूसरी तस्वीर जो है इसमें आपको कैथीड्रल की जो विंडोज हैं, एक कैथीड्रल की विंडो नजर आ रही है जिसकी पिछली साइड पे देर आर थ्री पीपल हु आर सिटिंग. तो ये जो स्टेन्ड ग्लास विंडो है, ये स्टेन्ड ग्लास विंडो से मुराद ऐसी विंडोज जिसके ऊपर मुख्तलिफ कलर की मीनाकारी हुई होती है. तो ये आपको you could see that stained glass art in the second picture. जो थर्ड वन है वो illuminated manuscript है. अगेन religious religious teachings जो कि आप इसको कैलीग्राफी के करीब जो है वो समझ लीजिए. और ये शाइनी मटेरियल से जो है लिखा जाता था. इसको आप अगर हमारे कल्चर में इसकी करीब तरीन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो दैट कुड परहैप्स बी जैसे सोने के तार से लिखा गया कुरान पाक, समथिंग लाइक दैट. उनके उनके रिलीजियस ट्रेडिशन में भी इस तरह की कुछ चीजें जो है वो मिलती हैं जिसमें रिलीजियस जो स्क्रिप्ट्स थे वो खूबसूरत कैलीग्राफी के साथ अंग्रेजी में ऑफ कोर्स, या फिर इन लैटिन, बेसिकली लैटिन में इल्यूमिनेटिंग किस्म के शाइनी किस्म के मटेरियल्स के साथ लिखा जाता था. ओके. Then we come to the next period which is known as Renaissance period. इसको पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं.
ये हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ही अभी बात कर रहे हैं. सो इसके अंदर हमें रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आइडियल्स नजर आता है. इसके दरमियान में देयर वाज दिस medieval period जिसमें largely जो themes थे they were predominantly religious और predominantly Christian themes. अब इस टाइम पीरियड में आपको वापस ग्रीक या रोमन ट्रेडिशन की तरफ एक झुकाव जो है वो दिखाई देगा. इसके अंदर जो ज्यादा फोकस है वो ह्यूमनिज्म के ऊपर है, प्रोपोर्शन के ऊपर है, पर्सपेक्टिव के ऊपर है. इसमें आपको ये जो माइकल एंजेलोस डेविड है, ये दिस इज नॉट अ पेंटिंग, दिस इज अ स्टैचू, this is a sculpture basically. Then we have this Mona Lisa. So माइकल एंजेलो का जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है डेविड, जो कि एक मुजस्मा है, और मोनालिसा डाविंची, लियोनार्डो डाविंची की जो पेंटिंग है फेमस जिसका नाम मोनालिसा है, इन दोनों की खास बात ये है कि दे आर मेड ऑन द आइडिया ऑफ गोल्डन प्रोपोर्शन. सो ये जो रेनेसां का पीरियड है, ये इट इज डिफाइंड बाय the advancement of science and mathematics, or logic and reason. So in this period, people with scientific inclinations, they believed that there is maths के अंदर there exists a golden proportion. और वो golden proportion वो है, it's like a mathematical value. और जो यूनिवर्स की तमाम चीजें हैं, दे आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू दैट मैथमेटिकल वैल्यू. सो डेविड और जो माइकल एंजेलो का मुजस्मा है, डेविड और लियोनार्डो डा विंची की जो मोनालिसा है पेंटिंग, इसके अंदर भी जो फिगर्स क्रिएट किए गए हैं, दे आर काइंड ऑफ representation of those golden proportions. So then we have so we see also the expression of classical Greco-Roman traditions as well. Then there is this, they also capture the experience of the individual and the beauty and mystery of the natural world. So इसकी examples आपके सामने हैं, Da Vinci's Mona Lisa. Then we have Michelangelo's David. Then अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है. The focus was on humanism, accurate representations of the human body. So इस time period में जो images create हो रहे हैं, they are mostly the accurate or near accurate representations of human forms. So इस बात को अभी समझना या जहन में रखना इसलिए भी जरूरी है, बिकॉज जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो you would see art mostly going away from the accurate, realistic representation of forms. So the second painting here is known as Girl with a Pearl Earring. The last one is known as The Last Supper. Third one is Giotto's Lamentation, which is about the life cycle of Jesus Christ. And the first one, I have forgotten the name of this painting, but it's perhaps I'm sorry, I cannot recall at the moment. Okay. All right. The next is Baroque, which is from 1600 to 1750. Okay, somebody has written it's like
Fibonacci sequence. I'm not familiar with this term. So, Hasnan, could you please elaborate on that before we move on? I mean, it was the golden ratio that you were talking about. It's referred Uh-huh. to as Fibonacci sequence in maths. Okay, okay. Okay, right. So, uh, about Baroque, Baroque was about, the dramatic use of light, deep shadows, and emotional intensity. So again, if you look at the painting in the picture, so you see this very dramatic use of light and shadows. So अगर आप ओवरऑल पेंटिंग की बात करें तो ओवरऑल पेंटिंग में भी आपको लाइट और शेडोज का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कंट्रास्ट नजर आता है। और अगर आप इस पेंटिंग के अंदर मौजूद जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं जैसे इंसान है या फिर इवन विंडो फॉर दैट मैटर, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर भी आपको जो है वो you see this very high contrast of light and shadows. So these were used to show emotional intensity uh, in the art. So important artists of this time were Caravaggio, Rembrandt, and Peter Paul Rubens. Then we have Romanticism, which was from late 18th to mid 19th century. So the focus was on emotion, nature, and individualism. This was reaction against the rationalism of the Enlightenment. Romanticism as a period in English literary, in fact, European literary and artistic tradition is a time period which is about going back to nature. इससे पहले जो टाइम पीरियड था which was रेनेसां के अंदर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो लॉजिक और मैथमेटिक मैथमेटिक्स और साइंस इन चीजों के ऊपर था. So there was very less focus on emotions or individual human aspirations or connection with the world of nature. So romanticism जो है वो poetry के अंदर भी और art के अंदर भी it was kind of a reaction against the rationalism of the Enlightenment period. And in this time period, again, we see some realistic images of everyday life. Uh, then we have modern art, which is 19th century to present, not really, present, but जो मॉडर्निज्म का पीरियड है वैसे तो वो टेक्निकली 19th century, late 19th century से let's say 1850s onward से 1930s तक मैक्स जाता है. So it was departure from traditional representations, and there was a lot of experimentation with form, color, and abstraction. So this period is not about realistic representations. It was, about this huge experimentation with form and color and abstraction. For instance, the painting that you see in front of you is Van Gogh's Starry Night. So इसके अंदर आप देख रहे हैं कि although it's a static image, but you see a lot of dynamic element in the painting. You can see a lot of movement in the painting. तो आपको वो कलर के जरिए से और फॉर्म के जरिए से ऐसे लग रहा है जैसे जो पिक्चर है दैट इज perhaps kind of sort of इन मोशन. और इसमें आपको सितारे नजर आ रहे हैं या आपको perhaps चांद नजर आ रहा है. लेकिन दिस इज नॉट वेरी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन. दिस इज वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसमें आर्टिस्ट ने जिस तरह चीजें असल में दिखती हैं उसके साथ काफी एक्सपेरिमेंटेशन की है और उसने चीजों को उस तरह दिखाया है जिस तरह से वो उसको इमेजिन कर रहा है, ना कि उस तरह से जिस तरह से वो असल में दिख रही है. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको लाइक आई होप के समझ आ रहा हो कि things are represented as the artist is imagining them, and not perhaps as they really are. तो इसमें वो artistic imagination और experimentation का बहुत अमल दखल है. और experimentation ना सिर्फ कलर के साथ बल्कि फॉर्म के साथ भी. And you see a lot of abstract ways here. Then we have impressionism जो कि लेट 19th सेंचुरी में खासतौर पे फ्रांस के अंदर ये आपको मूवमेंट नजर आती है.
सो इसका जो फोकस है वो लाइट और कलर के ऊपर है और फ्लीटिंग मोमेंट्स के ऊपर है। फ्लीटिंग मोमेंट्स यानी वो मोमेंट जो तेजी से गुजर रहे होते हैं। और इसके अंदर भी आपको जो यू कैन सी अ ब्रेक फ्रॉम रिजिड स्ट्रक्चर। सो आपको नेसेसरीली रिजिड किस्म की या एक्यूरेट किस्म की फॉर्म्स इसके अंदर नजर नहीं आती। ठीक है। सो इम्प्रेशनिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि नन ऑफ इट इज परफेक्ट बट ऑल ऑफ इट इज ब्यूटीफुल। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म्स इसमें क्रिएट की जाती हैं उसमें भी परफेक्शन नहीं होती है, वो रियलिस्टिक नहीं होती, उसमें कोई परफेक्शन नहीं होती है। लेकिन ये है कि व्हेन यू नो लुक फ्रॉम लुक एट द कंप्लीट अगर इमेज, तो देन यू सी अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन इट। अगर आप इनको अभी तो खैर ये जूम नहीं हो सकता, अगर आप जूम इन करके देखें तो इसमें जितने भी आपको चीजें नजर आ रही हैं, लेट्स से कि थर्ड पेंटिंग के अंदर you see these two girls playing piano. So if you look at the curtain, if you look at the sofa behind, if you look at the flowers, even if you look at these girls, none of this look अगर आप इनको जूम इन करके देखें तो ये रियलिस्टिक या परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप जूम आउट करके इफ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ इट, तो देन इट लुक्स ब्यूटीफुल। So again, this is the expression of how the artist perceives an image, instead of how the image really is. So impressionism में भी आपको ये चीज नजर आती है, बिल्कुल इसी तरह से जिससे आपको मॉडर्न आर्ट के अंदर ये चीज नजर आती है कि इट्स अबाउट खैर मॉडर्न आर्ट में तो इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा है। इसमें इमेजिनेशन उतनी ज्यादा नहीं है, इसमें ये है कि हाउ द आर्टिस्ट परसीव्स अ थिंग, नॉट हाउ ही इमेजिन्स अ थिंग बट हाउ ही or she perceives a particular thing, they paint it that way. So they're not trying to be perfect, they're not trying to perfectly capture it, they're just uh, trying to capture the moments or images as they perceive it. सो देन वी हैव क्यूबिज्म, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में है, कि आर्टिस्टिक मूवमेंट है। सो ये दिस इज abstract art that breaks down objects into geometric shapes and it challenges the perspective. So if you look at these images, um, you see a lot of fragmentation here. You see these images, uh, ऐसा लगता है कि एक इमेज को किसी ने तोड़ के मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स में कन्वर्ट किया और फिर उन ज्योमेट्रिक शेप्स को वापस जोड़ दिया। तो ये आर्ट आपको उस तरह से दिखाई देता है। इसके पीछे वजह भी है कि जो 20th सेंचुरी है यानी 1900 ऑनवर्ड्स, इट वाज अ पीरियड ऑफ ह्यूज केओस। सोसाइटी में, खासतौर पे यूरोपियन सोसाइटी में ओवरऑल बहुत ज्यादा केओस आपको नजर आता है, क्योंकि सोसाइटीज जो है वो अब रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। नाउ वी हैव इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एज कंपेयर टू एग्रेरियन सोसाइटीज। हमें एक शिफ्ट नजर आता है फ्रॉम रूरल वेज ऑफ लाइफ या एग्रेरियन वेज ऑफ लाइफ से अर्बन और इंडस्ट्रियल वेज ऑफ लाइफ की तरफ। और फिर ये है कि इस जमाने में बहुत ज्यादा जंगें भी हो रही हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब आपने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर लिए हैं, यानी ऐसे हथियार जिनसे बड़े पैमाने पे तबाही की जा सकती है, जिसकी वजह से अब जंगों में पहले से ज्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हैं और जो सोसाइटीज हैं वो तबाह हो रही हैं। और that is way too much for the human beings to bear. तो जो artists और poets हैं, since they are sensitive as well, when they look at all this, तो उनको ऐसे लगता है कि सोसाइटी जो है वो अब बिखरती चली जा रही है और मुआशरा जो है वो बिखरता चला जा रहा है। और इस बखेरे को शायद समेटना नामुमकिन होता चला जा रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे पुराने आइडियल्स थे, जिनके मुताबिक हम जिंदगी गुजारते थे, दे हैव ब्रोकन डाउन। जो हमारे कोड्स ऑफ लाइफ थे, जो या जो यूनिवर्सल कोड्स थे, दे आर ब्रेकिंग डाउन कंप्लीटली नाउ। एंड सो इस पीरियड का जो आर्ट है, इसके अंदर ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये बेसिकली उस आइडिया को भी रिप्रेजेंट करती है दैट things are falling apart now, and it seems that there is nothing
that can hold them back, that can hold them together. And even if, an artist is trying to hold them together, uh, they cannot really, put them back together. क्योंकि जब उसको वापस जोड़ने की भी कोशिश की जाती है, तो ऐसे फिर images create होते हैं that, really challenge your perspective. तो अभी जो मैं ये बात करी थी कि things fall apart, center cannot hold anymore, ये विलियम बटलर येट्स की एक नज्म है. विलियम बटलर येट्स was writing in the 20th century, यानी 1900s का कोई टाइम था when he was writing. And the title of this poem is The Second Coming. और इस नज्म में विलियम बटलर येट्स भी यही बात करता है कि हर चीज जो है वो it's just breaking down. Things, generally speaking, are breaking down. So, उस नज्म की ये लाइन है कि things fall apart, the center cannot hold anymore. तो आमतौर पे आपका हमारा आइडिया ये है ना कि there is this central integral force that keeps everything together. So, 20th century is the kind of time when the center cannot hold anymore and things are just breaking away. Then we have surrealism. Surrealism is a very interesting movement. It is the expression of unconscious mind, the depiction of illogical or dreamlike scenes and ideas. तो जिस तरह हम जब अपने ख्वाब में जिन चीजों को देखते हैं, they do not make any sense. They are very abstract, very nonsensical. तो surrealism जो है, it is the expression of unconscious mind. जिस तरह हम ख्वाब में जब चीजें देख रहे होते हैं, तो कुछ उस किस्म के सीन्स और आइडियाज आपको इन पेंटिंग्स में नजर आते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक एट द फर्स्ट पेंटिंग, ये ऐसा लगता है जैसे इट्स लाइक बीच, इट्स अ बीच, एंड दे एक आपको एक ड्राइड अप डॉल्फिन का इमेज भी नजर आता है, बट यू नॉट रियली श्योर कि ये डॉल्फिन है भी या नहीं. एंड देन यू सी क्लॉक्स that look like as if they are melting away. So surrealism, the images that are not, very conscious, that are not very realistic, but that remind you of your dreams, the dreams that you see in your sleep. आगे चलते हैं. Then we have postmodern artists. Postmodern artists में ये अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जॉन मिशेल बास्कियात. ही इस ये आर्ट आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है, मतलब वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ लाइंस एंड कलर्स यू सी इन दीज पेंटिंग्स. और फिर इसमें आपको ये एक मास्क नजर आ रहा है. This is, a traditional African mask. So, his paintings are about, the struggles of African Americans in a modern world. So, Africa is supposed to be, a traditional society with, primitive values, with traditional values. जिसमें आपको ये इस तरह की काफी सारी traditions नजर आती हैं, या rituals nazar aati hain, where people wear these masks and, do certain kind of rituals or performances. So it's a very, traditional kind of society. On the other hand, America is a very, advanced kind of society, very modern kind of society, जिसमें इस तरह की traditions और rituals की कोई space नहीं है. And at the same time, America is the society that is enslaving people from Africa. यानी अफ्रीका से वो slaves बना के, गुलाम बना के अमेरिका में लोगों को ले जा रहे हैं. फिर एक जमाने में आके जो स्लेवरी है वो अबॉलिश हो गई है, यानी गुलामी जो है उसको खत्म कर दिया गया उस आइडिया को. लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, इक्वल सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता. सो पीपल कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, दे होल्ड दीज ट्रेडिशंस वेरी डियर, दीज रिचुअल्स वेरी डियर टू देम. उनके लिए ये ट्रेडिशंस और रिचुअल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो एक मॉडर्न सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी, इसमें उन ट्रेडिशंस की या उन रिचुअल्स की कोई स्पेस मौजूद नहीं है. लेकिन the Afro-Americans who are now living in America, now they constantly find themselves at this conflict कि क्या हम do we belong to our traditions or do we belong to the American society?
और फिर ये कि ये जो अमेरिकन सोसाइटी है ये भी उनको अपने के तौर पे कबूल नहीं करती, और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सेग्रीगेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है। तो इन आर्टिस्टिक पीसेस के अंदर आपको इन चीजों के साथ रिकंसाइल करने की एक स्ट्रगल नजर आती है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी किस तरह रिकंसाइल करेगी, जो अफ्रीकन अमेरिकन की स्ट्रगल है वो किस तरह से रिकंसाइल करेगी, जो रेस के मसले हैं यानी रेशल इश्यूज है, रेसिज्म है, उसके साथ किस तरह रिकंसाइल किया जा सकता है। तो you see all of those things, and these things make your life quite chaotic as well, and we see